Hey guys, this is Shivam Saha. So the topic for now is Ascariasis. For the NEET aspirants or for the ones who want to solve MCQ type questions, this video is for you. So let's start the video at once. Ascariasis का पैथोजन क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वेल, इट इज द एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस. उसका कॉमन नाम ये है कि कॉमन राउंडवर्म, इस नाम से तो जानते ही होगे. वेल, बता दूं तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस हम लोग पढ़े थे एनिमल किंगडम के चैप्टर में अंडर द फाइलम नेमाटोडा. एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के बारे में 3 पॉइंट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विद अ व्यू टू सॉल्व एमसीक्यूज. द फर्स्ट बीइंग दैट एस्कैरिस इज एन एंडोपैरासाइट, मींस इट लिव्स इनसाइड द होस्ट. The second point being that Ascaris is a monogenetic parasite. इसका मतलब ये अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट कर देता है. The third being that it is the most common as well as the largest human intestinal parasite. How does this disease get transmitted from one person to another? Like एक healthy इंसान को कैसे ये डिजीज इन्फेक्ट कर सकता है? ये तभी करेगा अगर कोई हेल्दी इंसान कंज्यूम करता है कंटामिनेटेड फूड या वाटर. ये डिजीज नॉर्मली ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है या फिर वो कंट्रीज में जहां पे सैनिटेशन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जाता. इनफैक्ट चिल्ड्रन हु डू नॉट मेंटेन अ प्रॉपर हाइजीन, लाइक दे हैव अ वेरी हाई चांस टू गेट इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज. मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि दिस इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट, विच मीन्स कि ये इंटेस्टाइन में रहता है इन ह्यूमन. बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेस्टाइन में कहां, सो जेजुनम बिकम्स द आंसर. लाइफ साइकिल ऑफ दिस वर्म, वी विल स्पीक अबाउट अ बेसिक लाइफ साइकिल. डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है. टू स्टार्ट विथ वी विल टॉक अबाउट दैट कैसे एक हेल्दी इंसान कंज्यूम करता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. व्हाट डू वी मीन बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर? आई इंप्लाई दैट वो फूड एंड वाटर जिसमें इस पैथोजन के, इस वर्म के एग्स हो, एंड जैसे ही वो हमारे बॉडी में जाता है वो हैच करता है इनटू लार्वा. व्हेन दिस लार्वा रीचेस द इंटेस्टाइन, इट एंटर्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. On entering the blood circulation, it can now affect the liver, it can also affect the lungs, it can cause pneumonia, and in fact if it reaches the trachea, it can multiply and cause obstruction. Well, it can cause a lot of problems, but after 3 weeks, only after 3 weeks, we cough it out of our respiratory system and some part of it we swallow it down. We swallow it and it reaches again the intestine, but this time the larva has formed into and converted into an adult. This adult is capable of fertilizing and releasing eggs. These eggs are released through the feces of the infected person, and of course it can contaminate the soil and water. So hygiene is very important. If you don't maintain hygiene, if proper sanitation is not maintained, you can easily get infected by this disease. सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इस डिजीज के? वेल, इट इंक्लूड्स फीवर विच इज कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस. देन द नेक्स्ट वन बीइंग लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का दिल नहीं करेगा बिकॉज इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन. वेल, तीसरा बात ये कि इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर सकता है बिकॉज आफ्टर रीचिंग द इंटेस्टाइन इट ऑफ कोर्स एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम पहुंचने के बाद अगर ये बाय चांस तुम्हारे मसल्स को अफेक्ट करने लग गया, लार्वा मसल में घुस गया, तो मसल पेन भी कॉज करेगा. एंड अगर इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया तो अनीमिया भी कॉज कर सकता है. एंड एक बात मैंने पहले मेंशन किया था, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन. इट कैन ऑल्सो कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन योर ट्रैकिया, नॉट ओनली इन ट्रैकिया बट ऑल्सो इन योर इंटेस्टाइन, क्योंकि काफी हाई लेवल में ये मल्टीप्लाई करते रहता है. सो दीज आर द सिम्टम्स विच इज नॉर्मली सीन विद दिस डिजीज, एंड विदाउट प्रॉपर medication you cannot cure it. So I guess after watching this entire video you will be able to solve almost all the questions. If not, नीचे comment section में comment कर दो, I'll reply to all of it. And pneumonia and typhoid के ऊपर videos बना चुका हूँ, so do consider checking them out. And इतना दूर तक video देख चुके हो, do hit the like button and also subscribe to my channel.